से सलमान खान को भी धमकियाँ मिलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी थ्रेट और आज भी इस तरह की चीज़ें आज भी हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आप मानते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए, न्यूज़ के द्वारा ही पता चलता है कि ये सब हो रहा है, और पहले जैसा नहीं है, इसलिए कहूँगा क्योंकि आज सरकार है, माहौल है बहुत अलग है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मुझे तो पूरा यकीन है कि ये प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया जाएगा। और रिपोर्ट्स, फायरिंग की रिपोर्ट्स है फॉर श्योर, लेकिन कौन, क्यों, क्या, इसके पहले की कोई हिस्ट्री भी नहीं, फ़ोन कॉल भी नहीं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी तो स्पेकुलेशन बहुत सारा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि इतनी मीडिया भी न्यूज़ फर्स्ट कौन डाल सकता वो ढूंढ रहा है, न्यूज़ राइट है कि नहीं वो किसी को नहीं मालूम, तो सब स्पेकुलेशन में ही चल रहे हैं। टॉकिंग अबाउट स्टोरीज, वेयर दे वेंट, व्हाट हैपेंड, इट्स सो इंटरेस्टिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज, like I keep saying, after Dhurandhar, everybody is saying Bollywood is back. I said no, Bollywood is finished. What is back is Hindi cinema, and what got us till here was Hindi cinema. We switched to become the wood, which we were never a part of, and that's why Hindi cinema is back. Narratives are back. Great narratives are back. OTT is giving you an opportunity to narrate such stories and understand what it is through stories, real cinema, films like Border doing well. हिंदी फिल्म जो हमारी इंडस्ट्री है, हमें थोड़ा वो जो, जैसे धुरंधर आपने अभी मेंशन किया, तो वो जो एक वो एक ग्रे शेड का जो एक तड़का है, जरूर एजी, क्योंकि उसमें आपको प्ले करने का भी मजा आता है। आप जब भी देखो तो नेगेटिव कैरेक्टर हो तो बॉडी लैंग्वेज हो, या बात करने का तरीका हो, या माइंडसेट हो, वैक्ट आउट होता है। हीरो हमेशा बोलते हैं कि हाँ फिल्म का हीरो है, लेकिन हीरो को सीधा रहना, हीरो को सही रहना, वो बहुत ज़रूरी है। एंड सही समटाइम्स कैन बी बोरिंग when you're looking at it on screen, being a good boy all the time. But whether it was Avara Pagal Divana and Yeda Anna, those mannerisms work. So writing helps those characters, but when you're a hero, it's tough to actually impress. Yeah. Because you feel, हाँ ये तो सभी कर रहे हैं. Cool. On that note, I think there are a lot of friends from media here. We will first go towards Dipti. Will do the book unveiling first. The moment that all of us have come here for. Thank you so much for answering the questions and sharing Pleasure. those experiences. Thank you, Ms. Aarti. That was really enriching. And Mr. Shetty, I remember in one of your interviews you had said कि बोला जाता है कि कैरेक्टर नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव कहाँ है? मेरे बच्चे को अगर मारा गया है और दुश्मन बॉर्डर के बाहर है, तो मैं नेगेटिव कहाँ हूँ? तो the thought resonated, sir, when you said that अंडरवर्ल्ड का आदमी या गैंगस्टर कोई ऐसे ही एक दिन सोच के नहीं बन सकता है और नहीं बन जाता है. So Shetty, it has to be him because he's played so many cops in real life and also villains, but at the same time, Bombay underworld during the 80s and 90s, when all of you were so instrumental in covering and exposing so many stories. What was your first thought? So first of all, I'd like to say that Mr. Suniel Shetty has been a dear friend for decades now, and we know each other from these many years, 30 years. Yeah, I can't think of anybody better than him to actually be part of this and inaugurate this book and launch this book, because his understanding of stories is so great. I mean, I remember when I started off as a film journalist, and when I used to write my stories, I used to always consult him on a lot of things, and he was like a mentor to me even those days. Those days he would guide me on so many things. I'm sure he does not remember many of those, but I remember every word that he said. So for me, that is always a pleasure to have him here. Other than that, his the characters he has played, as you said, that he's played cop roles, and but most of the awards that he's won has been when he plays maybe a gangster or something like that. So that has been something, and I hope, we have been hoping that he reads this book. He's read part of it, but he reads the whole book, and we will work together on this also in the future. No, he's already committed. They've already committed the story to me.
So it's not that I hope and stuff like that. That was a commitment I took just reading the synopsis of the story, because it always interests me. 90s is the year we came into cinema, I came into cinema, and that was the year the underworld was at peak, you know, and being a Shetty boy, I think somewhere or the other, somebody from the family or the other was involved in it because of all that we went through in our lives, you know, and suddenly you realize that one doesn't become a gangster because he wants to be a gangster. He's pushed into it, or he moves in. Sometimes it's fascination, sometimes it's what you go through in life and you're pushed, and when your back's against the wall, you know, you want to stand up and have your own. And I think that's what happened to the community. So that's something that I resonate very, very, very closely with. Like, you know, you mentioned, I mean, you've done an array of, you know, characters. You've got them to life on screen. I mean, you know, for all of us, like Vijayji mentioned, that so many of us would, you know, seek your advice. And you always very openly spoke about any issue that, you know, would be thrown at you. For that matters, you know, these days, I mean, a lot of times, courage was the word that we used for the introduction of the book and the occasion. And that is something which comes so naturally to you. I mean, you know, be it in real life or real life. Any particular incident that you would want to talk about from real life that, you know, needed a lot of courage in this particular context? I think even when we were shooting in the early 90s, I remember shooting at Goregaon, and we were shooting in one of the gyms, which was owned by then, he had a security company. And somewhere down the line, he used that power of the security that he had for land grabbing and also creating a lot of problems. And I was shooting there, and suddenly, because it was a gym sequence, you know, they expected you to train all day, and you wanted to train all day because you wanted to look muscular. And in the afternoon, I was sitting, lying on the bench there because I was so tired, and suddenly I had my sound dada who came to me with no teeth in the front and bleeding. And I said, what happened? He said, no, ye ghosh ke aadmi log aake humko mare, or because they haven't been paid and things like that. I went out and I said, why did you do what you did? And he says, nahi, you know, our permission was not taken. So I said, who are you to take, why should we take your permission? And I remember a fight breaking out. And all hell broke loose. I hit. And I was a trained fighter. When I hit hard. And a lot of them got beaten up. We went to the police station. Because he was connected, the case was reverse filed upon us. And there was trouble. And that night, Ghosh had a restaurant there called Royal Challenge or something like that, you know, in Goregaon, Film City. And there was a shootout and a whole lot of stuff happened. And then they believed that I was responsible for it because I was a Shetty boy and I had complained, whereas I had not done anything. I had no connection at all. So I still remember that time, you know, a few times when fights broke out, there was trouble. And that's when I decided, you know, I'm going to stay away from all this because the surname carries so much weight, everybody feels you're going to fight back. But then I also came from a community that believed in pride, that believed, you know, in self-respect. And that's why. So I can never forget the 90s. We did films because we were threatened. I had security because I was threatened. Ki picture kar, dete itni de de, wo de de. All that used to happen then. So 90s is an era, 80s, 90s. Then came the sharpshooters, you know, the cops came in. How they busted this whole crime scenario was a fascinating world. So naturally, the book fascinated me, and the synopsis when I went through it, and I've been sitting with them even now, talking about stories, where they went, what happened. It's so interesting, and the best part is, like I keep saying, you know, after Dhurandhar, everybody is saying Bollywood is back. I said no, Bollywood is finished. What is back is Hindi cinema, and what got us till here was Hindi cinema. We switched to become the wood, which we were never a part of. And that's why Hindi cinema is back. Narratives are back. Great narratives are back. OTT is giving you an opportunity to narrate such stories and understand what it is through stories.
real cinema, films like Border doing well. So I think, yeah, times have changed for sure, and this is the kind of cinema that today's generation would want to see and understand. Ki, my God, was there a time like this also? And hats off to all three of them. You know, you see their body of work, the kind of risks they've taken, and gone into crazy places and understood what happened then. I think all of us, for all of us here, we have a perfect combination. We have three real-time, real-life crime journalists. And then we have Mr. Shetty, who's, you know, like he mentioned, he is, you know, a sportsman right from his childhood. He's been, you know, practicing sports. And then in films and real life, like he mentioned, he has the courage. But also, interestingly, he's played cop in nearly 18 to 19 films. But the awards that you received, majority of the time, you know, I remember the character in Awara Pagal Divana, and then even for Dharkan. For all the villainous characters, he's got the majority award. So is it that हिंदी फिल्म जो हमारी इंडस्ट्री है, हमें थोड़ा वो जो जैसे धुरंधर आपने अभी मेंशन किया, तो वो जो एक यू नो वो एक ग्रे शेड का जो एक तड़का है, जरूर एजी, क्योंकि उसमें आपको प्ले करने का भी मजा आता है. यू नो, आप जब भी देखो तो नेगेटिव कैरेक्टर हो तो बॉडी लैंग्वेज हो या बात करने का तरीका हो या माइंडसेट हो, यू नो, वैक्ट आउट होता है. हीरो हमेशा बोलते हैं कि हाँ फिल्म का हीरो है, लेकिन हीरो को सीधा रहना, हीरो को सही रहना वो बहुत ज़रूरी है. एंड सही समटाइम्स कैन बी बोरिंग when you're looking at it on screen, you know, being a good boy all the time. But whether it was Avara Pagal Divana and Yeda Anna, those mannerisms work. So writing helps those characters, but when you're a hero, it's tough to actually impress. You know, because you feel, हाँ ये तो सभी कर रहे हैं. Cool. On that note, I think there are a lot of, you know, friends from media here. We will first go towards, Dipti will do the book unveiling first, the moment that all of us have come here for. Thank you so much for answering the questions and sharing Pleasure. those experiences. Thank you, Miss Aarti. That was really enriching. And you know, Mr. Shetty, I remember in one of your interviews you had said कि बोला जाता है कि कैरेक्टर नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव कहाँ है? मेरे बच्चे को अगर मारा गया है और दुश्मन बॉर्डर के बाहर है, तो मैं नेगेटिव कहाँ हूँ? तो the thought resonated, sir, when you said that अंडरवर्ल्ड का आदमी या गैंगस्टर कोई ऐसे ही एक दिन सोच के नहीं बन सकता है और नहीं बन जाता है. That was really nice. And I would like to also, if Calvin and Raju sir, if you would like to share your thoughts, and before we go ahead and, you know, really launch the book finally. Yeah, thank you everybody. I'll share a few because I used to know Kishore by Garigapatti from because a good friend, a reliable source. So whenever we wanted some stories or to confirm, so he was the right person to do it. And then we three met him, and what the story we heard was unheard of. We have read so many books from informers or from agencies or from cops, but this was a real fact where he himself made a gang and took on Dawood and many things like JJ Hospital shootout, and now thankfully he's reformed everything and all is set up. But what we have penned it down in the book was till now, it is not there in any book. True. And we made sure that this thing we have penned down in the book. True. Thank you. Yeah, rightly said that it is very human at a core level. Raju sir, what would you like to say? Yeah, what the three of Hello, what the three of us were looking for. There's so many books on the underworld. True. Second-hand from police officers. Second-hand stories from police officers, from journalists, all that. We were looking for an insider account. To my mind, this is the first ever first-hand insider account of the underworld. I don't think it's been done before. If Chota Rajan talks, yes, that could be. But at that phase, Kishore Bhai is the one who's got the courage, everything, to talk about what actually happened. True. It's also a great story, of course, the redemption story. With so many ups and downs, Yeah. seriously. So a lot of effort had gone through it, a lot of research went into it, got close
about a year's research, fact checking, all that we got into. इस तरह से सलमान खान को भी धमकियाँ मिलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी थ्रेट और आज भी इस तरह की चीज़ें आज भी हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आप मानते हैं? क्या कुछ कहना चाहिए? 90s में अंडर इतना हावी था हमारी फिल्म इंडस्ट्री, बट अगर हम आज के टाइम पे बात करें, हमने जैसे अभी हाल ही में देखा रोहित शेट्टी के घर पे जिस तरह से फायरिंग एंड जिस तरह से सलमान खान को भी धमकियाँ मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं आज भी थ्रेट और आज भी इस तरह की चीज़ें आज भी हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आप मानते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए, न्यूज़ के द्वारा ही पता चलता है कि ये सब हो रहा है, और पहले जैसा नहीं है, इसलिए कहूँगा क्योंकि आज सरकार है, माहौल है, बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मुझे तो पूरा यकीन है कि ये प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया जाएगा। और रिपोर्ट्स, फायरिंग की रिपोर्ट्स है फॉर श्योर, लेकिन कौन, क्यों, क्या, इसके पहले की कोई हिस्ट्री भी नहीं, फ़ोन कॉल भी नहीं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी तो स्पेकुलेशन बहुत सारा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि मीडिया भी न्यूज़ फर्स्ट कौन डाल सकता है वो ढूंढ रहा है, न्यूज़ राइट है कि नहीं वो किसी को नहीं मालूम, तो सब स्पेकुलेशन में ही चल रहा है। आई थिंक बहुत कुछ चेंज हुआ है। इट्स फार मोर सिक्योर। 90s से तो बहुत ज़्यादा सिक्योर था, और 90s में देखिए कभी भी एक्टर्स या पॉलिटिशियंस या स्पोर्ट्समैन वैसे उनको टारगेट कभी नहीं करते थे। वो गैंग वॉर था, और गैंग वॉर में क्रॉस फायर में बहुत जन जो एक दूसरे को जानते थे उन्हें तकलीफ हुई है। 90s में तो हमें धमकी आती थी तो फिल्म करने के लिए धमकी आती थी, ये नहीं कि हम आपकी जान ले लेंगे या ऐसे वैसे। वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और हम फिल्म करते भी थे, सेफ्टी के लिए फिल्म करते थे। हम एक्टर्स थे, एंड सभी लोग यही चाहते कि हम सेफ रहे। सर, 90s का समय कहा जाता है कि बहुत ही दर्दनाक समय था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड का और फिर अंडरवर्ल्ड का संबंध रहा है, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई? मेरा संबंध रहा नहीं तो मैं तो इस पे ये नहीं। अभी आप लोग ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। हम 90s की बात कर रहे हैं, एंड फ्रॉम द टॉप जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो कहते हैं। तो आई थिंक उसी के बारे में मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस था या मेरा कुछ था तो मैं बोलता। बाकी मेरे जो थे, जो प्रॉब्लम्स हुए थे मेरी लाइफ में, वो उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। और थ्रेट भी था, और इस वजह से सिक्योरिटी थी। पुलिस साथ में था, 2-3 साल के लिए पुलिस वाले साथ में थे, एंड जब पुलिस वाले साथ में थे तो हमेशा सेफ्टी रहती थी। वो आई थिंक वो बात आज भी है। हमारे फोर्स में वो ताकत है कि इंसान को सिक्योर ज़रूर रख सकते हैं, और वैसा ही होना भी चाहिए कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इट्स बेस्ट टू गो टू द लॉ रादर देन टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। So my question to all the three authors, sir, this idea of writing, we have a different stories in it, or it's one story that we are going with that. And second is like the gangster must be still existing. We must have written. Are they there? And you don't feel like any kind of threat for that our देखिए, इफ यू रियली आस्क मी अबाउट द फियर ऑफ दिस, हम लोग जर्नलिस्ट थे तो तब भी नहीं डरते थे, तो आज तो डरने से रहा है ना। फर्क ये है कि जो स्टोरी लिखा गया है, इट्स अ ट्रू crime story and the life of Shyam Kishore Garigapati. We have spent 100 hours with him, interviewed him, went back-checked his story, went to other sources also, spoke to them, and that's how we came together. So it's basically his life story of crime and redemption. मतलब इसमें खास बात ये है कि अब तक जितने बुक्स लिखे गए हैं वो एक पुलिस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है या फिर एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से, बट हमारा ये स्टोरी है फर्स्ट पर्सन में लिखा गया, उनके आवाज़ में, उन्होंने जो नरेट किया उसी को हमने बुक में उतारा है। तो आई थिंक नो बुक हैज़ बीन रिटन द वे इट हैज़ बीन रिटन इन दिस वन, बिकॉज इट इज़ लॉट ऑफ स्टोरीज विच केम आउट। हम लोग मतलब कैल्विन तो
बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर था, सर वाज आवर एडिटर, आवर बॉस अर्लियर। तो उन्होंने भी मतलब वी आर्सेल्व्स वर शॉक्ड बाय सम ऑफ द स्टोरीज दैट केम आउट इन दिस। हम लोग सरप्राइज थे कि अच्छा ऐसा हुआ था, हमको तो ये लगा था, क्योंकि अब तक जितने भी जर्नलिज्म किया गया है दैट इज कम फ्रॉम द पुलिस फाइल्स, एंड दिस इज नाउ वी आर गोइंग टू द अदर साइड एंड आस्किंग आपकी स्टोरी क्या है। विच इज जो आई थिंक ब्यूटी होगी इस किताब की, कि उनकी भी अपनी कहानी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई गैंगस्टर ऐसे ही शौक से गैंगस्टर नहीं बनता, यू नो, उनकी भी एक कहानी है, उनकी भी एक स्टोरी है। तो आई एम श्योर इट्स अ फिनोमिनल रीड। So the Black Scorpion, the name itself is very different. किसी को जाता है, एक लिखने वाले मतलब किसी की स्टोरी के ऊपर जाता है या ये श्याम किशोर गरिगापट्टी उनकी स्टोरी है, और पुलिस ने उसको एक निकनेम दिया था उस वक्त, ब्लैक स्कॉर्पियन। अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टाइटल क्यों दिया गया है। ये पुलिस फाइल्स में नहीं, उनका नाम तो फाइल्स में प्रॉपर नाम था, लेकिन उसका जो कोड नेम होता है वो ब्लैक स्कॉर्पियन था, उस वजह से। अन्ना जी, इस इवेंट के बाद आपका सेल फोन आप स्विच ऑन रखेंगे, ऑफ रखेंगे, फ्लाइट मोड पे रखेंगे? आप बताइए इन जनरल, किस वजह से? इस इवेंट के बाद की कहीं आपको कॉल आया सब? मुझे नहीं पता, आप बताइए। कॉल आया तो रिसीव कर लूंगा और बोलूंगा, जो बोलना है बोलूंगा। मैं क्यों बंद करूं कॉल? तभी मैंने बंद नहीं किया, तो आज कैसे बंद करूं और किस वजह से बंद करूं? मेरा तो अच्छा ही है सबके साथ। इसके अलावा जब मेरे लिए गैंगस्टर, सबसे बड़े गैंगस्टर्स कौन है पता है? आज की तारीख में आप लोग। डर सिर्फ मीडिया से लगता है कि क्या छाप देंगे, क्योंकि आजकल अब्यूज व्यूज है। हुज राइट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हुज फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट। न्यूज पहले फैला दो, तो मेरे को डर सबसे बड़े गैंगस्टर आप लोग, और तू खासकर। इसके अलावा क्रिकेट कल से स्टार्ट हो रहा है, T20 कल से स्टार्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का जो नया ड्रामा चालू हुआ है 15 अगस्त के लिए, उनके लिए क्या रिएक्शन? आप ही ने कहा पाकिस्तान का नया ड्रामा, तो ड्रामा ही है। मैं बस ये जानता हूँ कि अंडर 19 की टीम हो आज शायद हाँ जीत ही जाएगी। सूर्यवंशी 74 बॉल 175 था, और अगर चाहता तो 250 भी मारता था, बिकॉज ही वाज एट इट। तो वो वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप जीत रहे, और मैं चाहता हूँ कि T20 का ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते, बिकॉज वी हैव अ फिनोमिनल टीम, वी हैव अ फैंटास्टिक टीम। जो बैलेंस है टीम का बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, कुछ पाकिस्तान Thank कुछ you मैसेज so देना much. चाहेंगे? Thank you so much. मैसेज देना चाहेंगे पहले? जो खेलने नहीं आ रहे तो उस क्या आप अरे मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान आके श्रीलंका में खेले। न खेलने से क्या हो जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की, जैसे एशेज की राइवलरी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड।